manager? No, his friends. Friends. Yeah. It's on camera. My manager. I hike two mountains. Yeah. No, not yet. That's she's Spanish, so she is French. तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रतीक। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं मुआ केव, जो कि है वियतनाम की सबसे फेमस जगह। और इस प्लेस का एक्सपीरियंस मेरा कुछ इस तरह रहा। सबसे बेस्ट लोकेशन है निन बिन में मुआ केव्स, और यहाँ का टिकट आपको पड़ता है 1 लाख वियतनामीज डोंग, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं 350 रुपये। बट अच्छी जगह है, बहुत सुपर जगह है, और आप 1 से 2 घंटे यहाँ निकाल सकते हो मुआ केव्स में। तो यहाँ है ये गाइड। अगर आप टूर बुक करके आते हो तो आपको ऐसे खड़ा किया जाता है और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप 5,000 रुपये पर डे पे करके आए। उसके बाद आपको बोला जाता है कि टिकट आपको ही लेना है। तो आई डोंट थिंक कि ये वर्थ इट है, इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने आप आओ, यहाँ हॉस्टल में रहो और एक्सप्लोर करो। गाइस एज यू कैन सी, ये रास्ता होके जाता है इसका, वो बहुत ही सुंदर रास्ता है। अभी सनसेट का टाइम है। यहाँ आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, लाइक यहाँ पे है लीट है होटल। यहाँ आप स्टे भी कर सकते हो, बट आई थिंक बहुत कॉस्टली होने वाला है ये, तो बेटर कि आप सस्ते में एक्सप्लोर करो। यहाँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपकी जेब ढीली कर सकते हैं। आपको चलनी पड़ सकती है काफ़ी सारी स्टेयर्स, बट इट्स वर्थ इट। ऊपर से जो व्यू आने वाला है वो सुपर है। जितनी भी हाइक है टोटली वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ के व्यू देखो गाइस। वी आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन अगेन। अभी और हाइक बाकी है, हम करेंगे, ऊपर जाएंगे, टॉप से व्यू दिखाएंगे आपको। बट वियतनाम काफ़ी अच्छी कंट्री है, और यहाँ के माउंटेन्स की ख़ास बात यह है कि फ्लैट सरफेस पे है, सीधे रोड है, आप ड्राइव कर सकते हो। सो अपने पीके भाई फॉरेनर्स की फ़ोटो लेते हुए और फिर हुआ एक बहुत ही बढ़िया सनसेट। और सनसेट के जो सीन्स थे गाइस, टोटली वर्थ प्लेस था। सामने थी बहुत बड़ी माउंटेन्स की वैली, और था एक बढ़िया सनसेट। लुक एट दिस व्यू। वहाँ हो रहा है सनसेट, कलर्स बहुत ही प्यारे हैं, और इन्हीं के लिए हम ट्रैवल करते हैं कि नई नई जगहों को देखें। सामने हो रही है बोट राइडिंग। अगर आप फ्री टाइम में आते हो कि आपके पास टाइम है काफ़ी, तो आप बोट राइड भी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा आप जानते ही हो, मुझे बहुत पसंद है फॉरेनर्स से इंटरेक्ट करना। तो एक और इंटरेक्शन स्पेनिश ट्रैवलर्स के साथ। वी वांट टू पिक्चर। यस, आई कैप्चर the interaction with people, and I talk about the places, and then with the music I will post the drone videos. Yeah, so like a trailer. Nice. Trailer of location. Cool. Yeah. Yeah, looks great. Yeah, Yeah, I will. You have a You. new follower now. Yeah. I will follow you back and write me on DM. Yes. So yes, Perfect. I will share the Nice. drone Very footage. nice. Yeah, I applied for Germany last year, like for Schengen visa, Yes. but it got denied. Sorry. Denied because I sad. travel solo. Yeah. Ah, okay. Yeah. To Jaipur? Jaipur, yeah. Yeah. You like the city? Yes. What about the food? Spices? Spicy food? I like spicy, but not much. In India, for me, it's too much. Yeah, because in India we eat so much of spices. No, Yeah. it's okay. Also you? No, Not yet. no, not yet. That's You should to visit India. So when you are planning to come India? now in Vietnam, From- last year in Thailand. Ah, okay. But from Vietnam, it's like cheap flights to India. Yeah, but I have to come back to Spain now. Ah, okay. Yeah. You are from Spain? You're no, three? No, I came from Italy, but I live in Spain. She's Spanish, so she is French. Okay. Thank you. Thank you. I'm with PK. I'm a hiker in India. Like I hike two mountains. Yeah. Peak, no? PK is my name. Okay. PK, yeah. Okay. So you, okay. Yeah. Manager? His manager? No, his friends. Friends. Yeah. brother. Yeah. I also have my account. Okay. It means He just starting I just this started work. This work. Wow. Yeah.
It's on camera. My manager. Yeah. Okay, perfect. So how many days in Vietnam? 2 weeks. 2 weeks? Yeah. It's your which day? How many days? No, we almost 1 arrived week. last 1 week? Yeah. yeah, New Year? last Yeah, Saturday. Yeah. We did the New Year in Hanoi. Yes, we were also there. Big crowd. Yeah, Yeah. it was crazy. It was crazy. And then we went to Sapa. Supper? Yeah, we are missing supper. So Tomorrow we are going to Halong Bay. Well, which one? We are going Which to, company? Uh, Which BD Travel we are going with. With a cruise, booking no, coffee in Bangkok. Okay. I don't know quiero the saber el name. nombre. I don't know the name. Yeah. I don't don't know, remember. cruise, Yeah. something. Yeah. No. Yeah. Also that tour is free for us. Sir, what? It's free for us, like we shoot for the companies and they sponsor our tours. Yeah, I think maybe it's the same. It depends on the company. But Yes. the cruise is 5 stars Ah. because there is 4 and 5, so which Yes. is 5 because it's almost the Yes, the yes, yes. price. And there are fluctuation in the prices. Yeah. 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 We will see tomorrow. Yeah. Maybe we will see each other. Yeah, I will recognize. Let's see. I will ask you for a picture. Yeah, for sure. I love to take pictures. It's my work. Yeah. Yeah. Okay, nice to meet you. And have a nice trip. Yeah, bye bye. Bye. सो गाइस काफ़ी टायरिंग डे रहा आज। हमने एक्सप्लोर की काफ़ी सारी जगहें जो मैंने मेंशन की थी और अभी हम जा रहे हैं बस बुक करके वापस हनोई, क्योंकि कल हमारा टूर है हैलोंग बे की ओर। काफ़ी टायरिंग ट्रिप चल रहा है, जल्दी जल्दी बहुत सारे प्लेसेस कवर कर रहे हैं और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस कवर कर रहे हैं। तो आज जैसे नेशनल पार्क गए, मुआ केव्स गए, तो काफ़ी अच्छी जगह थी। ड्रोन शॉट आपने देखे लिए होंगे। सो हम जा रहे हैं हनोई, वही बस राइड जिससे हम आए थे दिन भी। 450 से 500 रुपये का टिकट है। बहुत ही लग्जरी बस है। इसमें आपको मिलती है मसाज, यहाँ से आप बटन ऑन करके ले सकते हो मसाज, चार्जिंग पोर्ट है और लाइट्स बंद करने का ऑप्शन भी है। तो अभी हम पहुँचेंगे हनोई, फिर आपसे मिलेंगे कल नए सफ़र पे हैलोंग बे। हैलोंग बे में हमें मिली है फ्री ट्रिप। जो प्राइस रहता है 5,000 रुपये, 4 से 5,000 रुपये पर डे का टूर जाते हैं, बट हमें मिला है वो फ्री। कैसे मिला, क्या हमने बात की, कैसे हमने चीज़ें सॉर्टेड की, वो आपको बताऊँगा अगले व्लॉग में। तब तक लिए गुड बाय।